Hello, hello everyone. Welcome to the first live stream, which is called Reset. I have with me today Haider Shishmahal, who's joined me all the way from Pakistan. I'm Nadeem Rahman, your host for today, and we will be talking about mental toughness today. So this session, basically, we're going to be doing this. I would say bilingually because obviously my background from Pakistan and Haider is also from Pakistan. So what we want to do today is we're going to identify the problem, what the problem is. We can see अभी currently हम लोग जिस situation में सारी पूरा COVID-19 there are a lot of issues that are happening globally. We want to discuss those issues, but the reason for coming here today live is because it has impacted individuals more than it has ever impacted anyone before. So I have with me today my guest, Haider Shishmahal. I'll just give a very brief introduction of Haider. So Haider is basically, Haider specializes, or basically um, he basically lives between the intersection of psychology, games and uh, education and technology. So इनका current focus जो है वो business, psychotherapy, online education, technology and games projects. That these are all the projects that Haider has worked with before. He's the founder of the After Hours Therapist and Cyberjack Studios. He's also the partner and director for Pixel Art Games Academy. He's a published author. I've also published once with him, which we can discuss later sometime. And the amazing part is, although I've studied with Haider, but he went on forward to win a Fulbright scholarship at Harvard, where he basically specialized in a lot of things. Part of them being design, counseling, psychology, neuroscience, and most recognizably, he's recently studied from King's College London as well. So that's a very brief introduction. But again, he's basically the chapter lead of transformative psychology and a member of American Psychology Association and American Counseling Association. So that's a very brief introduction of Haider. I'd like to introduce him. I'd like to welcome him to the show today. Hello, Haider. Hi, Assalamu alaikum, Nadeem, and I'd like to say hello to everyone else who's joining in as well. And thank you so much for the warm introduction. Yeah. No, it's my pleasure. Okay, so Haider, just diving on, because I know a lot of people, and we discussed this earlier. We're not going to be talking about ourselves. We're going to be talking about the problem and try to provide the best solutions possible to people. So I think we've discussed this before. The general problem is a lot of people are getting either laid off or furloughed, which they're calling in the UK and Canada and other places, where a person basically एक इंसान के साथ होता ही है कि वो एक अच्छी भली जॉब कर रहा है और कल से उनकी जरूरत नहीं पड़ रही. So they're being furloughed or they're being asked to leave the job because they're basically just being redundant क्योंकि organization को उनकी जरूरत नहीं है. दूसरे मसले ये हो रहे हैं कि क्योंकि अब हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, everyone's at home and everyone is living which they never used to. जैसे एक एग्जांपल है, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या आपकी वाइफ है, पहले आप इतना वक्त उनके साथ नहीं गुजार रहे थे और अब आप वक्त गुजार रहे हैं और छोटी-छोटी चीजें से आपकी जैसे एक एग्जांपल है टिक हो जाती है या आपको कोई आदत बुरी लगती है जो पहले आपको चीजें के बारे में पता नहीं थी. So a lot of the times we're spending a lot of time with our family members, our parents. How do you feel that mental toughness can play an important role in these times? क्यों जरूरत है mental toughness की? इसके हवाले से मुझे बात करनी है आपसे. और mental toughness होती क्या है basically? अगर ये आप थोड़ा सा बता सकें. जी नदीम, I think आपने बिल्कुल exactly summarize किया है कि सबसे जो important challenges आज के हैं वो यही हैं. एक तो uncertainty about the future, खास तौर पे इसमें financial uncertainty and economic uncertainty with job losses or the threat of the job loss or the business downturn, जो कि एक recession है, जो कि definitely अब I think everybody has the idea कि अभी recession में हम आ गए हैं and negative growth हो रही है. So we are all aware of that. एक बात ये है. दूसरी बात आपने की वो ये है कि घर पे आजकल spending more time at home के हम लोगों ने जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शायद साइन किया था हमें ये अंदाजा नहीं था कि हम 8 घंटे जो ऑफिस जाते थे अब वो हम नहीं जा सकते. So we don't get any breaks from the family and we're all
समटाइम्स छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह आपने कहा कि बात का बतंगड़ बन जाता है, एंड जी, बिल्कुल, स्मॉल थिंग्स स्टार्ट टू रियली गेट ऑन द नर्व्स, तो व्हिच इज़ के बिल्कुल, घर में हाउ डू यू live happily and not get frustrated and let these other frustrations come in. बिल्कुल, और बिल्कुल। बेसिकली जो आपकी बेसिकली मेन बात ये है, which is our topic today, is mental toughness, because mental toughness एक ऐसी चीज है which can help us in facing these exact issues that we're talking about, the uncertainty and the being at home, and getting frustrated and getting anxious and feeling stressed. तो देखिए, फिजिकल टफनेस तो सबको पता ही है व्हाट जी, फिजिकल टफनेस मींस, जी, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू से हाँ वो फिजिकली टफ है या वो कमजोर है, वो उसका वेट ज्यादा है या वेट कम है या हाइट है, दीज आर ऑल फिजिकल थिंग. बट मेंटल टफनेस इज एक्चुअली यू कैन से मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल टफनेस, बिकॉज मेंटल टफनेस आपकी बेसिकली आप कहते हैं जहनी ताकत कहते हैं, लाइक सो फॉर एग्जांपल मेंटल टफनेस आपको किससे बचा सकती है? मेंटल टफनेस आपको डिप्रेशन से बचा सकती है, आपको एंजाइटी से बचा सकती है, आपको पैनिक अटैक से बचा सकती है, आपको जो है ऑल द काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस, एंड it's pretty evident that के मॉडर्न टाइम में वैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस हैं मॉडर्न लाइफ की, सही, सही। अच्छा, बिकॉज जी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए फॉर द ऑडियंस टू नो, हमारा सॉरी मैं स्ट्रक्चर बताना भूल गया था। पहले हम 20 मिनट्स हम आपसे बात करेंगे, इनिशियली व्हाट मेंटल टफनेस इज़, टू अंडरस्टैंड दैट, टू ओपन द पेंडोरा बॉक्स, एंड कुछ एक्सरसाइज़ेज़ आप हमें बताएँ। उसके बाद फिर जो आखिरी के 10 मिनट्स होंगे, ऑब्वियसली 30 मिनट का सेशन है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लें। तो इनिशियली जो सेकंड मेरा सवाल है, ठीक है, आपने हमें ये बताया कि मेंटल टफनेस बेसिकली हमें एंग्जायटी और जो हमें फटीग है, जो मेंटल इश्यूज़ हैं, जो जिससे हम आज आम तौर पे गुजर रहे हैं, ऑब्वियसली एक बात का बतंगड़ बना देना घर में, और कोई चीज़ नहीं है रेपिटेटिवली, क्योंकि आप 4 दीवारों के अंदर बंद हैं, और जो प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, ऑब्वियसली हाउ डू वी डील विद दोज़ प्रॉब्लम्स? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आप मेंटली टफ हैं, इसका मतलब है कि आपकी ज़हन आपका ज़्यादा टफ है बॉडी के हवाले से अगर देखा जाए। और इसकी बड़ी इसकी एक्सरसाइज़ेज़ भी मैंने सुनी है, इसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। कुछ आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें बता सकते हैं किस किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं और कब की जाए, और इसको बेसिकली एम्ब्रेस कैसे करें मेंटल टफनेस को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको अंडरस्टैंड करना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स बता दें तो बहुत अच्छा होगा हमारी अच्छा, ऑडियंस के मैं लिए। उन एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ जो कि हम कह सकते हैं काफी कॉमन नॉलेज हैं. So we'll start with the sort of the easier examples, and then we'll talk about थोड़े से more complex concepts जो के हैं psychology and neuroscience वगैरह के. तो सबसे बेसिकली ये हमें पता है कि अगर हम अपनी रूटीन रखेंगे, हम टाइम से सोएंगे, या जो भी हमारी रूटीन है कि इस टाइम ये करना है, या अगर हमारे बच्चे हैं बच्चों की रूटीन रखेंगे कि बच्चों को इस टाइम जो है पढ़ना है, बच्चों को इस टाइम खेलना है, बच्चों को इस टाइम खाना खाना है, बच्चों को इस टाइम नैप करना है, हम अपनी रूटीन रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, विच मीन्स के भाई ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, हेल्दी फूड खाने हैं, होममेड फूड खाने हैं, बाहर से नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने, एक्सरसाइज होगी. तो ये रूटीन, एक्सरसाइज, डाइट, पानी वगैरह पीना, कुछ स्पिरिचुअलिटी, या ये सारी चीजें, आजकल तो वैसे ही रमजान चल रहा है, तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, बट वी नीड टू बी रिमाइंडेड कि दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, बिकॉज अगर आप पूरी रात जो है ना जागते रहेंगे और फिर आप दिन को सोएंगे, तो शायद और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों आपके और आपकी फैमिली मेंबर्स में, खास तौर में इफ यू आर लिविंग विद अ फैमिली, और अगर आप अकेले नहीं रह रहे. तो ये तो कॉमन चीजें हैं जो कि काफी लोगों को पता है. इसमें आप ये भी कह दें कि कुछ काम भी करें, कुछ पर्पसफुल काम भी करें, विच मीन्स हैव सम पर्पस, कि भाई इवन इफ योर पर्पस इज जस्ट के लोगों से बातें करना है, या दादी दादा से बातें करना है, या किचन में कुछ जाके पकाना है, या कोई ऑफिस का काम करना है, या कुछ लिखना है, या और आपकी हॉबीज भी हो गई, कुछ आपको रीड करना है, या आपको कुछ जी, गेम्स खेलने हैं. तो ये तो नॉर्मल चीजें होती हैं, एंड वी हैव टू बी रिमाइंडेड कि दीज आर द थिंग्स, दिस इज व्हाट गुड लाइफ इज अबाउट. The other thing, good life is also about connection. तो जितना आप कनेक्टेड रहेंगे अपनी सोसाइटी के साथ, लोगों से फोन पे राब्ता करें, एसएमएस करें, ईमेल्स करें, इस तरह की वीडियो कॉल्स करें, डिफरेंट चीजें करें, दैट मेक्स अस फील कनेक्टेड, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स, हम एक सोशल स्पीशीज हैं.
So we thrive better in society when we feel interconnected, then we feel secure. ठीक है? अब आ जाते हैं थोड़ी सी एडवांस्ड sort of concepts पे, and I'm going to talk about two things which are very related. अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा ऑडियंस के लिए। पहले आपने बताया कि पहले चीज जो आपने बताई कि वी नीड टू कीप टू आवर स्ट्रिक्ट रूटीन, जो भी है घर के अंदर एक रूटीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपने बताया कि रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, क्योंकि मैं नोट्स ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं भी सीखना चाह रहा हूँ आपसे। सेकंड चीज है कि आपके कोई, आप पैशनेट हो किसी चीज के बारे में, आपका पर्पस हो। ऑब्वियसली एक सेशन हमारा फ्यूचर में इंशाल्लाह पर्पस के हवाले से आएगा। और थर्ड चीज है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द वाइडर सर्कल, टू योर वाइडर फैमिली मेंबर्स। बहुत अच्छी आपने तीनों एग्जांपल्स दी। इसके ये बेसिक रूटीन में देन वी आर इंक्लूडिंग कि रूटीन के अंदर आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट, इट्स नॉट जस्ट सोना उठना, बट इट्स हेल्दी लिविंग, हेल्दी एंड आपकी डाइट। ऑब्वियसली मैंने ये भी नोट किया कि मेरी पर्सनल डाइट भी, जब मैं बाहर जाता था, जब मैं वॉक कर रहा होता था, या ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज कर रहे थे, सारे जिम्स भी बंद हैं, तो आपकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी जैसे अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे कि आप ग्रीन टी और इसकी हेल्प के कि आपकी डाइजेशन ज्यादा हो, तो इंस्टेड कि आप जो है वो नेगेटिव ओबेसिटी की तरफ आप चले जाएं, आप हेल्दी फूड्स लेना शुरू करें और अपनी डाइट कम करें। ऑब्वियसली रमजान का भी महीना है, उसका भी फायदा होगा कि यू नो योर फास्टिंग, इंटरमीडिएंट फास्टिंग की भी एक बड़ी पॉजिटिव वो है, रिसर्च स्टडी है। तो अच्छा, ये आपने बेसिक बिल्कुल बताया। अब आप एडवांस लेवल के बारे में बताइए। अब एडवांस लेवल पे बात ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट है हमारा माइंडफुलनेस का, ठीक है ना? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंडफुलनेस ये होती क्या है, बिकॉज ये इसका उर्दू में आई थिंक लफ्ज आई वुडंट नो कि मैं एग्जैक्टली इसकी ट्रांसलेशन क्या करूं, मगर अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, मतलब कि हर लम्हे में अपनी प्रेजेंस या अपना होश रहना, कि आप इसी मोमेंट में रहो, ये होती है एक माइंडफुलनेस। क्योंकि असल में एक हार्वर्ड स्टडी ने बताया हमें कि ऑलमोस्ट आधा टाइम हम लोग जो है अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना? तो मतलब हाफ द टाइम हम प्रेजेंट है ही नहीं अपनी जिंदगी में। जो हमारा करंट मोमेंट है, हम उधर है ही नहीं। हम या तो फ्यूचर की सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, कल मेरे पैसे बनेंगे, या कल मैं ये खरीदूंगा, या मैं फलानी जगह जाऊंगा, या मैं ये सोचता हूँ मैंने पिछले लास्ट ईयर क्या किया। या सो माइंडफुलनेस एक होती है बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि हर लम्हे को आप अप्रिशिएट करें, आप इंजॉय करें, बेशक आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू नो, लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बोर हो रहा हूँ, देयर इज नथिंग हैपनिंग, तो मैं करूं भी क्या? मैं माइट एज वेल थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट। बिल्कुल। बट एक्चुअली द थिंग इज देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग, कुछ गलत नहीं है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल, आप एक्चुअली सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज आप जो है, अगर आप बाहर जाएंगे तो ये कोविड और ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। So if you are at home, you are at home with a purpose. आपका पर्पस तो है घर पे, right? You're supposed to not be going out. जी। तो बात यह है कि माइंडफुलनेस हर चीज में आती है। अब जिस तरह अगर मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं टीवी देख के खा रहा हूँ तो शायद मुझे पता भी नहीं लगे मैं कितना खा रहा हूँ, नहीं खा रहा, हर बाइट का मुझे अंदाजा ही नहीं हो जी। या अगर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ और मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरा जो लहजा है या मेरे जो वर्ड्स हैं उसको किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं माइंडफुल नहीं हूँगा। अगर इसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं, अगर हम लोग माइंडफुल रहेंगे ना तो हमें गुस्सा नहीं आएगा और हम दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद माइंडफुल है ना तो हमें नजर आएगा कि कोई दूसरा बंदा अगर कुछ कह रहा है, कुछ गुस्से में कह रहा है या कुछ और बुरी तरीके से कुछ बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि शायद इनकी कोई परेशानी है कि वो इस तरह बात कर रहे हैं या इस तरह बोल रहे हैं। तो माइंडफुलनेस is very very important and we need to define कि what is the mindfulness, ताकि हम लोगों को बताएं कि माइंडफुलनेस होता है being present। बड़ा अच्छा आपने ये बताया कि बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। बहुत सारे लोग हैं, ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कोविड के बाद क्या होगा या पहले जिंदगी अच्छी थी, तो ये बड़े लोग डिप्रेशन में चले गए, या तो एंजाइटी है या डिप्रेशन है। जिस तरीके से दो कोट्स मुझे बड़े अच्छे, वो कंग फू पांडा का एक बड़ा अच्छा कोट है बच्चों के साथ, क्योंकि हम फिल्में देखते रहते हैं। तो कंग फू पांडा में यही जो वो था अपना, जो क्या कहते हैं, वो जो टर्टोइस था, मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही सेड कि भाई इफ यू लिव इन द पास्ट यू आर टू मच डिप्रेस्ड एंड इफ यू लिव इन द फ्यूचर यू आर वेरी एंग्शियस, तो द बेस्ट इज टू लिव इन द नाउ
एंड उसी से मिलते जुलते हुए एक दूसरी किताब भी मैंने रिसेंटली पढ़ी है जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। और उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज जो आप बता रहे हैं, बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप आज के बारे में सोचेंगे तो ही आप कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल जैसे लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी स्किल्स बेहतर कर रहे हैं। या तो चलें घर पे एक एग्जांपल है, या तो कुछ नई चीज पकाना सीख रहे हैं, या कोई नया आर्ट सीख रहे हैं, या कोई नई स्किल सीख रहे हैं। तो कुछ इस किस्म के एग्जांपल्स आप बताएं कि बेहतर माइंडफुल कैसे हुआ जा सकता है, या अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ किस तरीके से लेके जाएं। या आप क्योंकि ऑब्वियसली हमने आपके बारे में पढ़ा है कि यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली बिकॉज यू लिव इन लाहौर एट द मोमेंट, राइट? तो आप इस्लामाबाद, सॉरी इस्लामाबाद, तो आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करें, क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं, कुछ उसके हवाले से बताइए। जी, so basically the thing is कि I have working with people from who having issues from anger to addiction to marital problems and career problems and stress and uncertainty. So these are the types of clients that I've had. And basically अगर आप mindfulness के बारे में बात करें कि I think one of the most important components of mindfulness first of all is self reflection. ठीक है, बिकॉज आप जब सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज आप एकदम से एक झुटकी में नहीं आप माइंडफुल बन जाएंगे, ओके? बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड नॉट लिसनिंग। कभी कोई हमसे बात कर रहे हैं, हम हाँ किसी अपने सोचों में गुम है। तो बात ये है कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल, मुझे I've been blamed a lot. I'm saying this on social media to be passive listening में मेरे ख्याल से भाई आप काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, आप हैं या मोबाइल पे हैं, and this is just being human, you know, your wife says something, your kids say something and you're not listening, and what happens is वो उनकी पर्सनालिटी पे ये इम्पैक्ट करता जा रहा है और आपको ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ यू विल फील दैट यू नो वेयर डिड यू गो रॉन्ग। ये आप सवाल हर बंदा पूछता है, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, यू वेंट रॉन्ग व्हेन यू डिडंट, मतलब जो आपने वो प्रेजेंट मोमेंट था आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, आपने उसको यूज नहीं किया। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन इनकी छोटी बिल्डअप होके एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ये आपने एक वो कंग फू पैंडा की एक मिसाल दी थी, मैं भी एक मूवी की मिसाल देता हूँ। आई थिंक इट वाज अ जिम कैरी मूवी एंड मैं भी उसका नाम भूल गया हूँ, बट बंदे के पास वो एक रिमोट होता है, वो फास्ट फॉरवर्ड करता रहता है अपनी लाइफ को। वो कहता है कि अब मेरे पास इतना पैसा होगा तो देन आई विल बी हैप्पी, एंड वो फास्ट फॉरवर्ड ताकि he doesn't have to go through the hard work and just he gets to enjoy the rewards with his family. Yes. And जब तक वो एंड पे पहुंचता है कि when he's supposed to enjoy the rewards, वो तो पता लगता है he's missed everything. Yes, exactly. बात ये है कि it's not about the goal, it's about the journey. It's about the journey, exactly. I think you've summed up the whole mindfulness, the whole activity of being mindful is about enjoying the journey. So I think self-reflection. Can you give us some tips on self-reflection? I think we learned reflection when we were studying together. We did. And that was the first time that I started to carry a diary. I think you remember the lessons. They really made us do a lot of forceful reflection, even when we didn't want to. Yes. So, but it is exactly that kind of training that has brought us here today. देखिए, एक होती है reflection on oneself, ठीक है, which is to imagine, you know, this is very important because sometimes we don't see ourselves from how other people see us, you know, and sometimes we have to take that bird's eye view, okay, like wo third person perspective, okay, what do we look like when we are angry, what do we look like when we are stressed, what do we look like, is that a good look, do we want that? No. ठीक है, तो एक होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। यस, which is another thing, which is कि जिस तरह आप कह रहे थे कि I don't, you know, I'm not listening, I'm ignoring, and reflective listening होती है like our conversation today, you know, we are reflecting on what I'm saying, you're summing up, what you're saying, you're asking, I'm summing up. This is also reflective listening, and this is also very important
part of mindfulness. Other important parts of mindfulness is listening to, for example, your body. Okay, and this is you have to listen to your body, your heart, your mind. के ये आपको cues मिलते हैं लाइफ में जब आपको कुछ आपकी बॉडी आपको कहना चाहती है कि इट्स ओके टू टेक सम टाइम ऑफ. देयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. बहुत ज्यादा काम करो या इस टाइम में कुछ कह रहे हैं कि घर पे हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लिखो, ये करो, पढ़ो, ये करो. और कुछ है भाई अपने लिए रेस्ट, रिलैक्स करो, इट्स ओके, इतना मत सोचो. सो लिसन टू व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग यू, व्हाट डू यू नीड. बिकॉज आपसे बेहतर कौन आपको बता सकता है कि आपकी नीड्स क्या है. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो आई थिंक माइंडफुलनेस जो मुझे अभी चीज समझ में आई है about mindfulness is that it is being in the present, but not just for your mind, but it is the whole body experience that you want to create through reflection, through understanding yourself more. आप जैसे जैसे अपने आप को बेहतर समझेंगे वैसे वैसे आप बेसिकली अपने पर्पस या अपने पैशन की तरफ ज्यादा जाएंगे, जहां तक मुझे बात समझ में आ रही. बिल्कुल. and that's what's going to lead to mental toughness. So if we come back to mental toughness, how can we get mentally tough? Okay, so we talked about these good habits, ठीक है, personal growth. Sorry, second क्या? Personal growth. ठीक है. And mindfulness is a lot of personal growth. ठीक है. We are growing as a person. So and slowing down, being present in the moment. ठीक है. इसकी कोई एक एग्जांपल मैं तो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप कोई क्लाइंट एग्जांपल या कोई ऐसी एग्जांपल देंगे कि आपको अपनी जिंदगी में इससे क्या फायदा हुआ है? I mean बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं. Everything, there are so many habits which were not helpful for me. ठीक है ना. I'll give you a small one. I don't want मैं बहुत ज्यादा deep इस time क्योंकि I think we're towards the end of the session, तो बहुत मैं deep बातें नहीं करना चाहता. But I'll give you a small one ना. अब मैं इस्लामाबाद आया, इधर बहुत ठंड होती थी. अब मैं कराची से हूँ, आप भी कराची से हो नदीम. आपको तो आदत होगी ठंडे पानी पीने की, वो भी बर्फ के साथ. ठंडा पानी कराची में गर्मी में, मतलब ठंडे पानी के बगैर तो मतलब जिया नहीं जाता ना. कराची काम ही नहीं चल सकता. काम ही नहीं चल सकता भाई. तो मैं इस्लामाबाद में भी आता था तो मैं ठंडा पानी पीता था. सही. और मुझे ये सीखना पड़ा कि इस्लामाबाद में ठंडा पानी पीना इज नॉट रिकमेंडेड, इवन अगर मौसम थोड़ी गर्मियों पे जाए, बिकॉज कभी भी बारिश हो जाती है, एकदम से ठंड आ जाती है. तो आई हैव टू लर्न कि नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर एट ऑल. और मुझे 1 साल लग गया उसको सीखने में, और बीच बीच में खांसी हो के. सो आई हैव टू लिसन टू माई बॉडी. माई वाइफ ट्राइड टू टेल मी, आई डिडंट लिसन टू हर, but then I listened to my body because गला खराब होता था. and then वो हमेशा कहती थी देखा और ठंडा पानी पियो. So this is how one reflects and one learns and then one becomes mindful. The mindful part of it is that now I don't drink cold water because I know that you shouldn't be drinking a lot of cold water in Islamabad. Other than maybe 1 or 2 months in the year, the rest of the year you don't drink cold water. बिल्कुल. मेरे ख्याल से हर बीमारी का इसी तरीके से अल्लाह ताला किसी को भी कोई बीमारी कंपाउंडेड बीमारी होती है आपको. जैसे ये नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठे और आपको जैसे कोई बीमारी हो गई जिस किस्म की आपको हार्ट अटैक हो गया. वो कंपाउंडेड बीमारी होती है. शुरू में आपने कोई ऐसी चीज की होगी जिंदगी में और आपने मिसाल के तौर पे आप खाना खराब खा रहे हैं और वो एक आपकी हैबिट बन जाती है. जब आप कुछ हैबिट्स आप अपनी बेहतर करेंगे तो आपकी मिसाल के तौर पे जो माइंडफुलनेस है कि आपको पता चले कि यार आप उठ रहे हैं. एक एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल देता हूँ कि मैं एक वक्त था कि मैं अच्छा जैसे जिम जाता था, फिर मैंने जिम छोड़ दिया. तो मैं एक दफा रनिंग करते हुए गया, कुछ काम था, मतलब यहाँ पे यूके जब आया था तो मैंने देखा यार आई वाज गेटिंग टायर्ड. मुझे लगा क्या मैं खुदा ना खास्ता बूढ़ा तो हो नहीं रहा. तो मैंने आई रिफ्लेक्टेड कि यार पहले जो है मिसाल के तौर पे रनिंग कर रहे होते थे, वॉकिंग कर रहे होते थे, और अब एकदम से आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप घर पे बैठे में. जैसे वो जो रिसर्च का जो हमारा टाइम था जिसमें पूरी रिसर्च की थी, तो और अभी भी जो एक एग्जांपल है कि आप घर पे एकदम बैठ गए तो आपकी बॉडी चेंज होगी. बहुत सारे लोग के थोड़ा सा पेट निकल आएगा, बहुत सारे लोग ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे. तो उसको आपको काउंटर किस तरीके से करना है, आप अपने खाने को किस तरीके से चेंज करेंगे, अपने रूटीन्स और अपने हैबिट्स को किस तरीके से चेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में आप क्या आई थिंक पॉजिटिव मैसेजेस के हवाले से भी थोड़ी सी आप बात करें कि हम बार बार ये मीडिया देख रहे होते हैं, एक नेगेटिव हमें कॉनोटेशन मिल रही होती है,
उसको हम कैसे अवॉइड करें? आपने कम्युनिकेशन की यहाँ बात की, कनेक्शंस की बात की, तो उस पे मैं चाहूंगा कुछ आप बताएं। I think बेचारे साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट पिछले 4-5 हफ्तों से बहुत आई थिंक टॉप ऑफ द लंग्स बता रहे हैं लोगों को कि अपनी न्यूज़ जी अपनी न्यूज़ का टाइम जो है आप बहुत लिमिट कर दें। सही। बिकॉज अगर आप सारा टाइम न्यूज़ साइकिल में पढ़ेंगे तो आप स्ट्रेस ही रहेंगे, बिकॉज वो जिस तरीके से वो ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस बंदा परेशान हो जाए। सो मेरा भी है, मैं आई डोंट मेरा जनरली लिमिट होता है 10 मिनट्स दिन का, ऑन बट एवरेज 10 मिनट्स होते हैं दिन हम का। लोग तो हर वक्त कनेक्टेड हैं, हम लोग हर वक्त, मैं अभी मोबाइल डिवाइस पे, मैं हो गया, आप हो गया, मैसेज किया, फेसबुक पे आ गए, लिंक्डइन पे आ गए, और ये स्ट्रीम्स हैं बेसिकली, अब हमें स्ट्रीम के अंदर डाल दिया। इसके हवाले से आप कुछ बताएं, जो जेन एक्स और जेन वाई और हमारे जैसे लोग जो मिलेनियल्स हैं वो सुन रहे हैं, इसको ब्रेक कैसे किया जाए, हमारे हैबिट्स चेंज कैसे किए जाए, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ओके, आपको लिमिट करना है, ठीक है ना? आपको अपना सोशल मीडिया यूसेज लिमिट करना है। आजकल आपने आई डोंट नो सुना होगा, न्यू टर्म इज बीन फ्लाइंग अराउंड लास्ट वीक से, ज़ूम फटीग। ज़ूम फटीग, यस, बिल्कुल ज़ूम बिल्कुल। फटीग। तो आजकल तो ये बिकॉज मैं भी ऑनेस्टली मैं उठता हूँ तो फर्स्ट थिंग इज मैं मेरी कोई ना कोई स्ट्रीम, तो somebody is talking about के एंटरप्रेन्योरशिप की बातें, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी चैप्टर की बातें चल रही होती हैं। तो एवरी डे इट्स लाइक देयर अ मीटिंग और द अदर। तो बात ये है कि हाउ डू यू चेंज योर हैबिट्स। अब आपको पता है, लॉट ऑफ पीपल टेल मी आई नो आई हैव टू डू दिस, मुझे पता है मुझे ये चीजें करनी है, मुझे पता है अपना मुझे सोशल मीडिया लिमिट करना है, या मुझे पता है मैं मुझे सिगरेट छोड़नी है, या XYZ मुझे हैबिट करनी है। हाउ डू यू बिल्ड न्यू हैबिट्स? एंड एक्चुअली मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, बिकॉज मेरे भी क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, बट हाउ डू यू डू दैट, व्हेन आई टेल देम कि यू हैव, ये इस तरह आपको नहीं करना, या इस तरह करना, या ये आपको, अगर आपको हेल्प नहीं करी तो ये आप क्यों कर रहे, तो यही पूछते हैं, बट हाउ, ठीक यस है ना? एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैच्योरिटी यही तो होती है, दैट यू बिल्कुल। जस्ट हैव टू डू द थिंग्स दैट यू आर अनकंफर्टेबल विद डूइंग, यस जो आपको आज आपको कंफर्ट नहीं दे रही, बिकॉज वो आपकी हैबिट है आपकी ब्रेन में। जी मगर जब आप एक दिन अनकंफर्टेबल होगे, 2 दिन 3 दिन, इवेंचुअली आपकी जब नई हैबिट बन जाएगी, तो आप पुरानी हैबिट को देखोगे, आप बोलोगे, हाउ कुड आई हैव डन दिस, हाउ कुड आई हैव बीन अ स्मोकर, हाउ कुड आई नॉट बी वेजिटेबल, मतलब कि लाइक बंदा जब हाउ कुड आई नॉट स्लीप ऑन टाइम, बिल्कुल जब आप बिल्कुल नई हैबिट्स बन जाती हैं, इट्स टफ, इट्स जस्ट यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल। बिल्कुल आपको मुश्किल चीजें करनी है, ग्रोथ हैपेंस इन टफ टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हैदर, where we want to draw a line now. Alhamdulillah, we've got enough information to take, and people can reach out to you. So just to let people know, Haider is available on all social media platforms. He can be found on Facebook, on LinkedIn, on Twitter, on Instagram, everywhere. The other thing that I wanted to to ask people, if there are any questions, please link them in the comments below in the YouTube channel. We will definitely want to answer the questions as we're drawing closer to the end. तो हम क्योंकि अब खत्म close की तरफ जा रहे हैं, तो we'd want to ask some questions. Let me see if we have any questions for us. So one of the questions that has been asked is how, again, जो आपने जिस चीज पे end note किया था कि how do we actually develop a habit? Can you basically talk to us about, अच्छा ठीक है, कोई हैबिट डेवलप करनी है, तो इनिशियली आप क्या, व्हाट वुड बी द स्टेप्स? कि अगर हमें एक एग्जांपल है, सोशल मीडिया एक एग्जांपल है, मैं अपनी एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले जो है, वो हर बंदे का एक प्रॉब्लम है, फोन आपके बराबर में, आपने सबसे पहले उठ के सोशल मीडिया देखना है, और आपका डे ढस करके पूरा रेकन हो सकता है, वो थ्रू एन ईमेल हो, थ्रू अ पोस्ट हो, या कुछ हो, और आपकी एंग्जाइटी वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है जब तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो how do we stop doing that? How do we train ourselves to do that? So Tough okay, one, yes. I'm going to so I have already said that you have to do the things that you're uncomfortable with doing, ठीक है ना? Right. But people still have a difficulty के, but how, मगर कैसे, मैं तो मेरा तो जी नहीं करता। Okay, so let's talk about how to build habits. Okay, Yeah. habits कैसे बनती है? Habits बनती है repetition से, सही है ना नदीम? बिल्कुल जितनी बिल्कुल। आप एक ही चीज रिपीट करोगे, that's what is the definition of a habit, is Yes. something that happens again and again, right? तो रिपीट Yeah. करनी है, frequency.
बिल्कुल. And repetition कैसे आती है? Repetition happens by doing. So what we can look at is patterns. ठीक है. ठीक है ना? So you and I, we both studied the math in, I think, the बिल्कुल. BEd. So if we study the patterns, when does a pattern emerge? A pattern doesn't emerge, and patterns are all around us. ठीक है ना? The whole Yes. world, everything is in patterns, right? Yes. The, Yes. one of the fundamental like truths of the universe is कि patterns, बहुत ज़्यादा patterns हैं. Yes. And so the patterns happen whenever something happens 3 times, you can say a pattern has emerged. Okay. And on the flip side, अगर आप 3 times एक चीज नहीं करते, तो अगेन आपका पैटर्न नया पैटर्न बन गया. तो अगर आपको एक हैबिट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करनी है, आप 3 days एक्सरसाइज करो, आपकी एक हैबिट बन गई. 4th डे अगर आपने नहीं एक्सरसाइज किया, नो प्रॉब्लम, 5th डे करो. 5th डे नहीं किया, नो प्रॉब्लम, 6th डे करो. 6th डे नहीं किया तो ये 3 दफा आपने नहीं किया, अब आपकी पैटर्न बदल गई. सही. ठीक है. सही. So you want to set a pattern, you do something 3 times, and उसके बाद you cannot let it go for more than twice, because फिर वो नया पैटर्न बन जाएगा. ठीक तो है. अगर आपको हैबिट बनानी है, आप अपनी लाइफ में एक पैटर्न बनाओ. आप 3 दिन अनकंफर्टेबल रहोगे ना, Yes. उसके बाद तो हैबिट बन जाएगी इंशाल्लाह. Bettering, bettering. I think these are amazing insights that I've got from all the way from keeping a routine to build, having a purpose, connections, patterns, reflection, and I think leading all the way to mental toughness. We're now approaching the end. A question हमारे पास आया बहुत ही अच्छा. Do you think that mindfulness meditation is the same as other forms of meditation? This is a question by Rehan on LinkedIn. Can you answer I this? think Rehan has answered his own question, because he says that, do you think that mindfulness meditation, and then he says other forms of meditation. So he's himself recognized that there are many forms of meditation. So Isn't is it the same as other forms of meditation? Is it the same? So everything has its own unique sort of a thing, and there are things in common and there are things that are unique. So for example, very easy example, I like racket sports. ठीक है, racket sports में बैडमिंटन भी आ जाता है, टेबल टेनिस भी आ जाता है, स्क्वॉश भी आ जाता है, Right. टेनिस भी आ जाता है. सारों में रैकेट है, सारों में बॉल है, मगर हर स्पोर्ट के कुछ अलग अलग चीजें भी हैं, right? Right. So the same goes with meditation. When it comes to mindfulness meditation, all of them are linked to building your awareness of self, bringing you in the moment, but they also have certain things unique. The Vedic or the Indian style of meditations, or the Taoist or the Chinese styles, or the Western mindfulness based, or even you can say even prayer is a type of meditation, isn't it? Yes, exactly. So Yeah. so it's tasbih. So Yeah. they are. I think they're all different. They share some commonalities, and they share some differences. So what we were discussing today were not all types of meditation. We were discussing particularly mindfulness, which is not necessarily even have to be meditative, but it is a practice that you can make in throughout your day, in everything from how you get up in the morning, because they say you shouldn't jump out of bed. You can get injured as you get older. You don't jump out of bed. You're supposed to first lie in bed 2 minutes, then slowly get up out of bed. This is also mindfulness, right? Thank you so much. I really love the example that you gave of sport, and I think that resonates and that reflects with what mindfulness is. So we have an interruption in between, but nevertheless, let me summarize very very precisely what has happened. Let me summarize very precisely. So we started off with building routines. If you want to become mentally tough, mindfulness, we start with building routines, having a sort of a purpose beyond yourself in life. Okay, we have another session for purpose, so please keep connected with us on YouTube, on LinkedIn, on Facebook, because एक purpose के ऊपर भी एक session है, and being connected to the wider circle and your wider family. Okay, we started off with this. This was the basics of being mindfulness. Okay, then we entered up into being present in the moment. I think the power of now, to understand how important it is, and to be able to reflect and to be able to create habits, which is very important. Okay, and I think a great example. We have another question. Do we have time, Haider, for another question from Fawzia? I'm okay. Yeah. Okay. So Fawzia has asked, does self-reflection require meditation? That's a very good question. What meditative activities are
suggestive to keep the balance, especially during these days? I think this is like the closing question, and one very important question that we need to answer. Okay, so I'm Okay, going to so repeat the question. yeah, I'm going to repeat. I've got the question. I can You read have the it. I've question? got the Okay, question. great. Yeah. Thank you. So I think that I'm going to keep it very simple and not try to engage too much in complexities. बात यह है कि I it's semantics whether you want to call something reflection or meditation or how you want to argue your points. But in my opinion, self-reflection does not require meditation. Okay, self-reflection is self-reflection, which means just thinking about what happened. Whereas meditation usually it's supposed to mean something in specific, something in particular, and that it does not that might contain self-reflection, but self-reflection is something else, and meditation is something else in the strict meaning Great. of the word as I would define them, or as I imagine if you put it in a dictionary, they would define it. So that's the answer to that. And they're both very positive habits. So you would want to do both. Yes. The second part of the question is, what meditative activities are suggestive to keep the balance, especially during the day? Again, I'm going to keep it very simple. There are a lot of different practitioners who have gotten a lot of benefit from many different types of meditative techniques. मगर मैं अपने जो हमारे viewers हैं, looking at the broad-based audience, मैं एक चीज कहूँगा which I think anyone here who is listening can apply, which is I want your meditative activity to be just कि आप दिन में 10 मिनट अपने लिए निकालें, या 15 मिनट या 5 मिनट, जिधर आप सिर्फ एक टाइम साइलेंस में गुजारें. And I'm going to teach you a short 1 minute, Nadeem, if you have the time. Okay, so we're just going to, let's say I'm just spending a few minutes by myself. I'm going to just I'm going to breathe in and I'm going to breathe out for 4-5 breaths. And each breathe in and breathe out is going to be 5 or 6 seconds long, or as much as you can manage. Now, the type of meditation that I like is something called focusing, which is also a related thing. And in focusing, one looks and pays attention to their head, then their face, and then down their body. And they kind of like think about what is bothering them and then push those away, and then kind of look deeper within themselves and focus on really what is on their mind. So that's focusing. It's not exactly like it's a type of meditative technique. It's something kind of different from mindfulness, and that's the one that I do. So I would suggest to anybody who's listening, just spend 5 or 10 minutes to your day. It doesn't have to be like this. Just spend it in silence and looking inward. You can think of a metaphor. You can think of a concept. So again, it's a very big topic. I can't go into all of the different types of things, but the main thing is just spend 5-10 minutes by yourself, just observing your thoughts and your body. Start off with that kind of basic kind of stuff. Okay, great. So what I've understood is that both these activities, self-reflection and meditation, both these activities, self-reflection and meditation, are different activities. One obviously is to think more or less, and the other is like an activity that you perform, right? One is a thinking activity, the other is a performing activity. I've done both, then I can reflect as you're exactly right, because meditation sometimes can just be breathing and not necessarily thinking, whereas self-reflection will always involve metacognition or thinking about yourself. And I think meditation, self-reflection में you bring a lot of things into your mind, whereas meditation में आप बहुत सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल रहे होते हैं. तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है लोगों को बताने के लिए कि द डिफरेंस बिटवीन इट. ऑब्वियसली जब आप किसी एक्सपर्ट के पास, जैसे हैदर एक एक्सपर्ट है, उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि यार एक्चुअल में है क्या, आप स्टडी करें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है. तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें आप चीजें पूरी दुनिया की जो एक एग्जाम्पल है, मैं डेटा के हवाले से बात कर सकता हूँ कि आप लोग चीजें समराइज करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में, मैं कर क्या रहा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, या हाउ आई स्पेंट माई डे. सेकेंड इज अबाउट मेडिटेशन, जिसमें आप चीजें अपने निकाल रहे हैं,
जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या जो भी क्लटर हुआ है उसको निकाल रहे हैं. तो दो एक डिफरेंट, एक पुल इन और एक आउटवर्ड एक्टिविटी है. I think it was a very brilliant, both the questions were very excellent questions. And Heather, it has been a pleasure. I'm sorry I've taken more of your time today than we had asked for, but I think I think the especially jo hum value provide karna cha rahe the, I hope the value will be transmitted towards the listeners, inshallah, and benefit them. Thank you so much for joining us. Thank you, Nadeem. It has been a pleasure. And if to all the listeners, if you've enjoyed this session, please share it with other people. You have the YouTube link. You can join Haider, you can join myself on various platforms, and I would say spread the positivity, spread the message of resetting yourself during this COVID-19. And inshallah, we will fly out with flying colors, inshallah. Thank you so much, Haider, for joining me. Thank you, audience, for listening. And we will be back tomorrow with a session with Sayyid Saad Amin tomorrow. And I'm going to, inshallah, after this session, I'm going to be posting out the details for the session, but it will be on the same time as today. And we will be talking about purpose. We will be talking about passion. Okay, so that links to what Haider has started off. I think the whole concept of being mindful is the most important. That's why we started off with Haider's interview, or I would say discussion with Haider. Thank you so much once again, and have a lovely evening, everyone. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.